without having some clarity, it's really difficult to register. It's just for your, later on you can take as many. These two are already there before you leave this place. But this is just for the purpose of your person. Ranga, where are you, sir? But in this it's mentioned 4 semesters. Pardon? Semester 4. 4 semester. It's told 1 and 2. TMBA is 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester. T leadership is 1 semester. Okay. This is T leadership. And the fees we take for first 2 semesters together? First is 15,000. Okay. And 4th semester is 60,000. What is Means second to 4th. Second to 4th is 45,000 more. Okay. First semester we are breaking into 2. One is suppose parents. If I want my parents, they were there last time. तो उनको 4 सेमेस्टर कराने का जरूरत नहीं है. First semester से they get the transformational leadership, their purpose of life, and it's okay. So उनको हम लोग गाइड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 15,000 is the fee, 3 days is the time. You have to come in. If the person is for complete course, then it is 4 semesters, 60,000. And what is the 3 lakhs 80% scholarship? I mean, Actually, this is for the faculty. What we are communicating as a faculty, that the people must get the value worth 3 lakh. That if they invest 3 lakh rupees for 6 months program, they should get that back, which they are getting at 60,000. So the quality of program is to match the expectation of that somebody has paid 3 lakh, even though ideally they have paid less. That is. So not clear. Yeah. I'm not clear. Listening will make it clear. The moment you listen to your disempowering conversation, जैसे मैंने पहला लाइन बोला and fast English बोला, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. And when you give the power to that, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. Then after 5 minutes you also मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. But when you will say, अच्छा पहला लाइन मिस कर गया, okay, but I will get it. I will get it. So by the end of the complete conversation, you will get it. So keep on checking the mind. ये empowering conversation दे रहा है या disempowering conversation. Okay? So I repeat. हिंदी में जो व्यक्ति को पूरा MBA करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल MBA करना है, 6 महीने का कोर्स. No, this was 80%. Okay. No. So that I understood. Okay, right. Sorry. 80% is the actual course fee is 3 lakh rupees. But we are not charging that. हम लोग उसको 80% scholarship दे रहे हैं, everybody. Because we know that 2-3 things. One is that this is relatively high fee, considered as that we want to include everyone. If we keep, यदि हम लोग इसका फीस 3 लाख रखेंगे, तो एक मेजर सेक्शन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कार्ड कर रहे हैं, which is not our purpose. So therefore we have reduced it. Our cost is also less in this case, because the faculty that we are here currently is willing to, are very committed, is willing to pay work even without pay, or if at the bare minimum. But the kind of quality we are giving and the kind of investment that will require for creating the leaders and all, it is very high. And it will be very high in future. If we want to attract the best people in the community and we want to give the best to them and their expectation will higher. So it will be consistent with the fee of 3 lakh. उस 3 लाख इसलिए रखा गया क्योंकि जो faculty होंगे, they will be world class. And world class faculty cannot be retained because it's a demand supply gap. If we want world class, we can't ask them, अच्छा आप जो है अपने जीवन की जो आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा मत कीजिए. So they may be given उनको अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी, अच्छा रेम्युनरेशन देने का प्रावधान है. अभी चूंकि
कॉस्ट हमारा उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि द पीपल हु आर, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑन पर्पस, और शुरू में दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी, नॉट ओनली ऑन मनी। तो इसलिए हम 60,000 में अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन अफोर्ड एंड बिकॉज वी, चूंकि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं और चूंकि सबको लाना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है कि जब ऑलरेडी फुल हो जाते हैं तब आप डिमांड सप्लाई को, अभी हमारे पास स्पेस है, 30 पीपल आए, उस 30 पीपल में 4, 5, 10, 300 की लाइन लग जाए, तब आप बोल सकते हैं 60,000 से बढ़ाना पड़ेगा, हम ज्यादा फैसिलिटी देना चाहते हैं ज्यादा। अभी कॉस्ट के हिसाब से दिस फी इज ओके, इसलिए हम लोग उसको कम करके क्लियर क्लियर। You have created the conversation, क्या बात करेंगे? So we will have one more, ठीक है? आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपने लिखा है कि मैं इस तरह से रजिस्टर करूंगा। Who will like to do practice? Registration conversation is always resisted. Pull it up. I do it. Yeah, come. Should I come there? Yeah. And if you master this, I tell you, never ever in your life you will have, कभी भी जिंदगी में आपको ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपकी डिमांड मार्केट में यूं ही बढ़ जाएगी, जो आदमी यदि ईमानदारी से रजिस्ट्रेशन कॉन्वर्सेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग चेक एंड गेटिंग द फॉर्म, इट आल्सो इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूड करता है कि जब आपका वो कॉन्वर्सेशन होता है तो सामने वाला पार्टी भी खुशी का एहसास करता है। क्या है यार बातचीत का स्टाइल है, स्टाइल मतलब नॉट फ्लावरी एंड दैट थिंग, बट यार कैसे कम्युनिकेट करता है कि यू नो लाइक मजा आ गया रजिस्ट्रेशन कॉन्वर्सेशन में, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया यार, थैंक्स अ लॉट, मेरे को भी तूने अपॉर्चुनिटी दे दिया, you know they feel win, you know win-win situation, वो है conversation. Yes. Yeah, I'll be addressing this to Eugene Das. He's a trustee with PVL Health Organization, that's a trust, which it's an NGO. Let's say, hi Eugene, I wanted to share my experience with you regarding a seminar I attended on attitudinal transformation. Why don't we direct call to the person? This is Go ahead. Let me know. Okay. The program is called PMBA, conducted by Mr. Naveen Chaudhary. It's a 3-day residential program near Kasara, and it is a leadership program with teachings on the base related to teachings from landmark education, focusing on finding a purpose in life. It's been very effective. Have you attended a session from Landmark Forum? Are you open for such a program? It's really benefited me a lot, and be great if you can attend. It costs, it's only a 3-day, and it costs around ₹15,000. That is how I put it. So consider that enrollment is over. मतलब I am enrolled. कि हाँ यार तुम्हारा बातचीत से तुम्हारा पर्सनालिटी में शिफ्ट जो आया है, मैं करना चाहता हूँ, तो I am enrolled. Now do the registration part. Okay. So okay. ये प्रोग्राम मेरे को करना है, तो क्या करना है? So this is okay. Then you will have to I will have to. the registration for this program. I am the boss of NGO. I don't do under have to. Pressure में मेरे को नहीं. Okay. There is a the registration for this program. We are up till 1st April. We are taking the new admissions till 1st April. So why don't you register with us? I'll send you a form across. It's a 1-page form wherein you got to set up your goals and give it to us. Along with the fees check. Okay. That's how I'll convey that. But I am not giving you a form.
Yeah, I'll be. I'm not giving you check. Okay. So then- Registration conversation is I am giving you that. I am taking action right now. You are not doing that. We are not talking enrollment conversation. We are talking registration conversation. Like, you are asking for the form filled up. We are asking for the check right now. Okay. Okay. Hi Eugene. We had spoken about the TMBA program, and you were and you showed your interest for the same. But still I haven't received the form from you. Can I have it soon? You will have it soon. When can I expect the same? Anytime. Can we have a date, because the last date is 1st of April. We are already on the 29th. First of all, free. Yeah. Too much time. Anytime. Okay, so 1st of April, should I take it from you, because I'll have to convey the same to the organization. First of all, it's better. So should I take it for sure? Yeah. Everything is for sure for me. I have never, broken my promise. I'm the managing trustee of NGO. That's What? That is the thing. Okay, so and what about the check? I mean, how do you want to make the payment? You also have the e-payment facility. I mean, do we have it? Okay, e-payment, okay. Yeah. You have account number, I think, yeah? Yeah. So can we expect it by 1st April? Yeah. Okay, then see you on 1st April. Then I'll have to call back on 1st April. No problem. Yeah. So, and then again call back on 1st April. That's what I can. No problem. Okay. I'll keep the phone up. So, this is registration conversation is not complete. Not complete. Yeah, then I have to call back on 1st. No, not call back. It's that you have heard it. That he is casual about it. Yeah. हाँ. बहुत सारे लोग हमारे लिए चैरिटी मांगने आते हैं, वो दे दूंगा, फॉर्म भरना या भर दूंगा. So registration has not happened. Registration conversation is where there is certainty. We have discussed logistics. He is clear about it. कि कितना बजे वहां से घर से निकलेंगे और उनको लाइफ में क्या चाहिए. अच्छा साहब, मैं फॉर्म लिख रहा हूँ. आपका फॉर्म मैं 1 अप्रैल को नहीं, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट करना है. So can I have a conversation about what you want in your life? These are the registration conversations. Okay. And it may open up. Okay. It is possible, and it can open up the opportunity. बहुत दिन से सोचा नहीं यार. मैं तो अभी तक चैरिटी और ये सब नहीं लगा हुआ था, but कभी लाइफ के बारे में सोचा नहीं मेरे को क्या चाहिए. मेरे को क्या चाहिए? Then he may go into the trap of मेरे को क्या. Then you will have to have the conversation again. Like, that is what is the perseverance. Because if you are committed to somebody's life, you take a stand. It's not easy. Okay. And when they see that this boy is committed towards my life, then they own up. Then they do it whatever you want. And then your purpose and mission gets accomplished because the people like them take a stand for you, because someday you took a stand that he attended this program or he got something in his life by any other way also. Unless you take a stand, why anybody else will take a stand? Why Ranga Sahab at this age should come all the way from Pune and be the part of this without knowing what will happen for him? It's a matter of stand. So that in the registration conversation, that stand is to be there. Okay. It's not just when can I have the form, but what is filled in the form and I have to. That he is clear, in his mind is clear Yeah, on he's going. fourth, says like third night, that it is in his diary. Okay. That third night, if he wants to come early, one day early, that third night at 6 o'clock. And how are you sending me vehicle, Manish? That will be his question.
Like Professor Ramji has asked, that what is, somebody will pick me up, like yes, what time, like it's registered, then it's a registration, registered, registration. Good job, good job, you went right. Now this is the practice that we need to do. Like if today you do pre-registration conversation, I think that's a good homework. That's like, you have, and registration can be in PMBA, can be in your life, like in your project, whatever you have taken, can be for your, like some function. That is all registration conversation. Only thing we are not aware of that, but we are continuously doing registration conversation when another person says yes. For example, I just did the registration conversation about the money has to be put in the bank. There was some check pending there. It was not in my calculation. I don't know where from that check came or something happened. So then I was in class. So I asked him to have the registration conversation with my wife. And I don't know how much he succeeded, but the result is there. I got the SMS that it has been done. So it's a registration conversation. We do it daily, then we create result. Otherwise, for these small things, we get disturbed, and this class cannot be taken if you don't have registration conversation taken on. Either you do or somebody on your behalf does. So that means first he got registered. Otherwise, he might have said, "Sir, मैं भी तो क्लास में बैठूंगा. Sir, मेरे को भाभी जी से बात करने में या मामी जी से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, या फिर sir मामी जी तो मना कर रही हैं." Various things might come up. He has dealt it. Yeah. We call it deal closure skills. Yeah. In sales, we say that, right? Deal close, closing the That's deal. okay. Can we give a big hand? Right. Shraddha, whether the food is ready. If not, we will have one more conversation. Yeah, who else will practice? कौन practice करना चाहेंगे? Okay. मोहन बाबू का जॉब अगर रजिस्ट्रेशन होता तो मजा आता है. बाद में पहले ये कर लेते हैं. Rajesh is my friend, so I am talking to him. Hey Rajesh, it was nice that you enrolled for the TMBA program, which will enhance your personality, integrity, communication skills, and give you purpose of life. When you are registering for the program fee is 15,000, and the last day for registration is day after tomorrow. No, but you are lying. Day after tomorrow, you are fixing, right? Yes. It's I'm not as just a policy. assuming that. No, see, you can't do assumption. You have to go by the policy. So last day is 1st of April. 1st of April, like last Monday, it is written in your brochure. But why to wait for 1st of April? So you are saying, I want to register you now. So you can say that. I want to register you now. Can we complete the registration process, please? You can say that. Okay. हाँ ठीक है, मान लीजिए मैं राजेश हूँ, ठीक है, आगे क्या करना है? So kindly fill the form and. मैं यार मार्केट में हूँ अभी. I'm in market. How can I fill the form? Kindly fill the form and send it back to me by the evening. Don't ask me to do all these things. I will do it. But बहुत busy चल रहा हूँ. बहुत काम है. You have to fill that form because that is. I have to. मेरे को force मत कर. देख रहा हूँ. Yeah, You are the person who sends me the form. Right. You are mirroring my emotions exactly. Have to, and you have to fill up and send it back. Yeah, I'm busy. Yes. But you are generous. Like,
Not everybody will be generous. Everybody will be like their feeling, they will express it. No, frankly, I thought the language was rather peremptory. Like, Peremptory, yeah. You know, you ask one of your subordinates, just fill this up and give it. क्या कर रहे I हो? thought it was rude. Fill it up till the evening and give it to me. Otherwise, ऐसा दे रहा हूँ यार. So, you know, like, it's very important that registration conversation is such that the other person, सामने वाला जो है, वो winning experience करे. ऐसा मजा आ गया आज. तुमने क्या बात किया? अरे इससे बात करके ही समझ में आ गया कोर्स क्या है. You know, no question to be asked. No, he started off well because there was infectious enthusiasm in his voice. Right. Then he started, hi Rajesh, Yeah. you know, there was excitement that you registered for this program. But then it has started. So it has to be like passion has to remain like because the commitment is not towards my job getting. You know, when I take it like मेरा काम हो जाए और मेरे को नवीन जी को because context is decisive. यही आपके लाइफ को रन कर रहा है. तो इधर में जहां ये हो गया यार मेरा ड्यूटी इंपॉर्टेंट है. तो सामने वाले के लिए तो मिला कुछ नहीं बचा कुछ नहीं. तो फिर क्या है यार चलो अब मैं जब मैं था तो हरी नहीं हुई. नेक्स्ट ठीक है तो मैं बिजी हूँ. I'll say please. योर इन्विटेशन प्लीज बोलेगा क्या आप उसका ओपन करेगा. यू नो जैसे आप मैंने जैसे कि आपने ये शादी में बुलाया अपने ब्रदर की शादी में सपोज तो ये आप प्लीज थोड़ी बोलोगे. आप बोलोगे अबे यू नो लाइक यू विल बी स्ट्रेट. अबे क्या बोल रहे हो. इफ ही इज योर फ्रेंड राजेश इज योर फ्रेंड राइट. अबे क्या बोल रहा है. सो यू गेट रिलेटेड. आप उससे रिलेटेड. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड बैकवर्ड बैकग्राउंड ऑफ रिलेटेडनेस. जब तक रिलेटेडनेस नहीं हो सिमिलरली आप जब रिलेटेडनेस एक बार होता है प्रोफेसर राम जी सर हाउ आर यू एक रिलेटेडनेस बन गया. अच्छा ही एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम अ प्रोफेसर. ओके चलो आगे बताओ क्या कर रहा है. सर ऐसा ऐसा है इसके लिए मैं चाह रहा था सर कि यदि ये आज आ जाता तो बहुत बढ़िया था. वी वांटेड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय 5 PM. इज इट पॉसिबल सर. Can you support me? Yes. It will help you also in focusing on the program. Something is to for him or so Rajesh, and if you see that the relatedness is not there, क्योंकि वो busy है मतलब relatedness कहाँ है? पहले जब वो कॉलेज में था या साथ में था तो थोड़ी बोलता था busy है क्योंकि you know that. अबे busy उसी मेल को मत बता. ठीक है. अभी तो वो सब आ गया ना. क्योंकि अभी आ गया क्योंकि वो रिलेशन खत्म हो गया है. उसको भरना खाद पानी तो देना होगा. So, जब तक रिलेटेडनेस नहीं हो तब तक ओपन नहीं करना है मुंह को. यस सरप्राइज. तुम तो यार सांबा की तरह खड़ा है. ए सांबा कितने आदमी थे. तो शोले की तरह सीन क्रिएट हो गई. बेड लगा के दो है पूरा. रेडी है. We'll just complete and come. Thanks a lot for that. Yes. I wanted to fill the form and let's just write 5 PM. Your want is not important to me. Are you in my world? मैं busy हूँ यार. तो you know like you go back to enrollment. Registration में struggle हो रहा है. You go back to enrollment. Hey Rajesh, अरे यार 5 मिनट समय देना. I want to have a conversation. उससे आप समझ क्योंकि he's saying you. I'm busy. मार्केट में हूँ. तो अब तो आप बात ही नहीं कर सकते because then it is rude or it is not in being in his world. You have to be in the other person's world. So he is busy यार मार्केट में है. So then you take. Can I request for 5 minutes? Your committed conversation. हाँ बोल 1 मिनट रुक जा. मैं थोड़ा साइड में गाड़ी लगाता हूँ. साइड में आता हूँ. थोड़ा पीसफुल जगह पे जाता हूँ. Okay. फिर you can have a committed conversation. तो मैं अब शांत जगह पे आ गया. अब बोलो. Actually, I want कि इस 5 मिनट में मैं फॉर्म तुम्हारा भर लेता हूँ. That is the only way. Otherwise 5 बजे तक तो हो नहीं पाएगा ना. फिर वो घर जाएगा, फिर घर में फैमिली को संभालेगा और फिर क्योंकि फैमिली को भी तो संभालना है. और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. You are supporting it. I am filling up your form. I need few details. What do you want out of this program?
प्रोग्राम में यार तू बोला है तो आऊंगा और क्या। नहीं एक्चुअली क्या तुम्हें जिंदगी में चाहिए आपका लाइफ में मेरे को क्या चाहिए, कोई माल मत्तर मिले, पैसा रुपये, तू समझता है ये राहुल हम लोग को अभी क्या चाहिए, एक जॉब मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, थोड़ा लाइफ अच्छा हो जाए, यही ठीक रहेगा ना। अच्छा ठीक है, तो आप राइटिंग एंड देन बिकॉज यू आर ट्रेन्ड यू विल राइट इट लाइक ओके सो आई एम राइटिंग दैट यू वांट जॉब राइट। अच्छा कितना सैलरी का तेरे को जॉब चाहिए, क्या 20 तो कम से कम होना चाहिए ना आज के जमाने में। Second, what else? And then he starts saying about various things of his life. मेरे को अपने वाइफ के लिए कुछ चाहिए, वो भी एम्प्लॉइज है, तो अच्छा घर में बैठे ओके what else you want? Parents थोड़ा सा क्या रखिए, health is not good, फिर उनका health बढ़िया, first for the parents। अच्छा यार मेरे ब्रदर है शादी नहीं हो रहा है, उसका ये हो जाए तो बच्चे यार सिस्टम से पैसे नहीं हो पाए। अच्छा यार फ्लैट में जो रेंटेड है यार 20 साल हो गए, कुछ बाई कुछ करना चाहिए, नहीं स्ट्रगल कर रहे बट चॉइस लाइक नहीं करना यार, थोड़ा विलेज जाना चाहते हैं, थोड़ा यार टूर करना चाहता हूँ, वर्ल्ड टूर यार, बहुत दिन में है, तुम पूछना ख्वाहिश पूछ लिया तो यार अब बता ही देता हूँ, वर्ल्ड टूर बहुत मेरा। मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है 5 7 10 आपने वो लिखा, he is clear about or that is what I want। तो मैंने बता दिया, आपने फॉर्म लिख दिया। नेक्स्ट kindly transfer the 15,000 rupees for जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं 6 महीने से, पैसा मत बोल। That is the fee for the program. I understand। So if you have problem, we can discuss. And I have a problem यार, discuss। so what's your problem? Why you are not? My problem is पैसा देके यदि कुछ फायदा नहीं हुआ तो I am giving you promise that you will get advantage after. प्रॉमिस से नहीं चलेगा, attending the गारंटी है क्या ये बताओ। प्रॉमिस से तेरा प्रॉमिस से मैं कहीं गारंटी है कि मेरे को फायदा होगा। Yes, I guarantee. ओके, और यदि नहीं मिला तो पैसा मेरे को वापस मिलेगा। No, that is not our structure. What not a structure? Don't talk to me. You people are cheap. By the way, it is our policy. If people don't get advantage for money back, they get their money back. Sorry. If they are not satisfied, what's the use of giving money here? And is it clear? We are clear. Yeah. And how many days it done? 2 days, 3 days, कैसे? 3 days after the completion of the program. After the completion of the program and practicing it for 30 days. If the 30 days they practice it and they say that no, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, you return it. Hey, we are not going to hold money here. What is this? And we know that it is 100% sure. And there will be one person out of 1 lakh people who is little bit need of money. Somehow he has paid and he needs money because somebody else is pressurizing. And he may say lie. 1 out of 1 lakh. But because it's your policy, you will return it. No question asked. It has happened. One of my senior, I sent him to the landmark court. He after doing 4 months advance, he said, I didn't get advantage. Landmark court returned all the money. But that's because he was suffering from money problem. And he was having too much his own knowledge. That's the knowledge binds. He is a very highly spiritual and blah blah blah. So like that knowledge binds. So he could not see the disadvantage side of that. But it's all back. No question. Clear? So now you're clear that you are supporting. Okay, but I'm still not clear. Come transfer. Come up with us.
this program will start. Can you see that the logistics part is also being left out? कैसे ले जाना है, कैसे दे जाना है, कहाँ रहना है, कब निकलेगा वो, कब ये होगा. You know, it's all the focus is more or less on form filling and money, but not on his comfort or his convenience and his life. उसका life का चिंता कहीं नहीं है. That's not a registration part. You know, जब शादी के लिए बुलाएंगे अमेरिका से किसी को, केयर लेते हैं ना, अरे तुम फ्लाइट में उतरेगा, मेरा गाड़ी पर रहेगा. It will pick up you up and bring it to my place. That's clear. इसमें हम लोग नहीं रख पाते because somewhere we are not in their world. So registration becomes different. Gift card. So, getting some sense? कुछ समझ में आ रहा है? झाजी? Registration बहुत जरूरी है conversation. बच्चे के साथ आप करेंगे, enrollment हो रहा है, registration नहीं हो रहा. Like शू के बारे में example ले, enrollment है, ठीक है पापा मैं रख देती हूँ. Registration नहीं है. And that the invitation is not occurring as an opportunity. It is occurring as a domination or instruction, not as an opportunity. Similarly, business plan बनाने के लिए बोले उनको. It is not occurring as an opportunity. Similarly, ये क्या बोलते हैं गाड़ी खरीदने के लिए. It is not occurring as an opportunity. It is occurring as a कैसा खड़ूस पापा है. दौड़ा सिखा रहा है, सिखाते सिखाते जान ले लोगे बच्चे की. That may be in the background. We don't know. So it is not occurring as an opportunity. So the moment the registration conversation is mastered, the other person is looking at that as an opportunity. Oh, Papa is thinking about it. That's what you said in the morning. Now I will have that conversation, which will have that as an opportunity. Clear? Dhanen? Clear हो रहा है? राजू? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तीनों चीज रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. एक भी चीज नहीं रहा तो रिजल्ट और नहीं मिलेगा जो खुशी के साथ मिल रहा है. ठीक है? We are breaking for that. It is 2 minutes to sharp like yesterday. Isn't it? 2 minutes to 2 was last day. We are taking an hour break. In a sense, we'll have lunch and a communication with. So have at least one enrollment conversation, one registration conversation. Only after enrollment is there. Now, because we were doing exercise at TMBA, we don't know whether we have done enrollment. So talking about registration will be like very, very dangerous. It will spoil the relationship. For anything, never ask for registration like form भरिए या ये fee भरिए या ये logistics है, कुछ भी चीज नहीं. जब तक वो inspired न हो by the possibility of part of your purpose or your possibility or TMBA or whatever, जिस चीज के लिए भी आप चाहते हैं, एक फ्लैट बेच रहे हैं या आप पान बेच रहे हैं, unless or until he is inspired to have pan, never ask for money, never ask for coming to collect. So that is the first thing. Are you like Suresh? Stand up there. Spongy, stand up there. I'm not doing homework. That's as much of integrity as coming on time. It's the function of out integrity. That's the function of out integrity. यदि हम लोग अपना होमवर्क नहीं करते, यदि हम लोग समय पे नहीं करते हैं जो हम प्रॉमिस किए हैं, then it is out integrity. और integrity नहीं है तो कुछ भी नहीं है. Nothing works without integrity. यदि अपने लाइफ में किसी भी एरिया में कुछ काम नहीं हो रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसा हमें चाहिए, that means certainly there is out integrity. Integrity गायब है उस जगह से, तो रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं. इंटेग्रिटी है तो भी रिजल्ट का गारंटी
क्योंकि इंटेग्रिटी के बाद इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन ये दोनों भी चाहिए, लेकिन इंटेग्रिटी के बाद इंटेग्रिटी नहीं है तो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होके भी कुछ नहीं है. Like enroll as a company, integrity was missing, enrollment was there, registration was there, people were buying, employees were joining, funds were coming, so enrollment was there, registration was there, integrity was out, it collapsed. Kingfisher, enrollment was there, registration was there, integrity was out. Sir, you were to look at the corporate function. Enrollment था, अरे यार क्या एयरलाइन से यार अच्छा खाना देता है, अच्छी एयर होस्टेस है, एयर इंडिया के साथ उसका लाइक अलग से स्पेस, हर चीज में स्पेशल उसने काउंटर खोल रखा है, डायनामिक पर्सनालिटी है, दिस है, दैट है, सारा इन्वॉल्वमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, ये है वो. इंटेग्रिटी वाज आउट. So if not today, tomorrow it will catch up with you. लाइट नहीं है सर. नहीं है. लाइट So थोड़ा सा ये खोल दीजिए. Thank you. इंटेग्रिटी के बिना कुछ नहीं. So इंटेग्रिटी है क्या? हम लोगों ने बात तो किया था, but whether we understood what is integrity? कोई बताएगा इंटेग्रिटी का क्या डेफिनेशन है? Oneness, okay. और Synchronization between thoughts, words and deeds. okay, और In one sentence, commitment towards result okay. without any damaging and mistake. Commitment towards result और Without damaging and mistake. without Damaging and mistake. without Any damaging and mistake. Without any damage. Mistakes. Without any mistakes. Without any damage and mistakes. this is it. वो कोई दूसरा वाला चैप्टर का तीसरा वाला that is different. कहीं और होगा. Commitment with result. Perfect. और आप इससे पहले भी कुछ तो जानते थे इंटेग्रिटी के बारे में, वो भी बताइए. Sincerity is not It's not integrity now. Togetherness, that is the Okay, oneness हो गया. और Wholeness. yes, wholeness, completeness, being self. being self. Okay, ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग हमेशा जानते थे कि अपने जुबान का इज्जत में इंटेग्रिटी में है, वो जो बोलता है करता है. Honor your own word. Honoring Word. your word. Commitment क्या है? How it is different from commitment? Commitment is keeping your word. Commitment क्या है? Keeping. और integrity क्या है? Honoring. Honoring your word. दोनों में difference क्या है? results लेके आया, keeping your keeping your word is action. Keeping your word is commitment. Like what difference? This is integrity. ये दोनों में फर्क क्या है? Keeping और honoring में फर्क क्या है? Keeping your word, that means this is the option of a result. And honoring your word, that is 100% confirmed that the result will come. Honoring मतलब इज्जत है. अपनी जुबान की Given. इज्जत है. इज्जत है. Feeling the responsibility. Honoring your word, अपनी जुबान की इज्जत है. जैसे यदि साहब और मनीष और राजू टाइम पे आए तो कमिटमेंट है, इन्होंने अपना वर्ड को कीप किया. आप नहीं आए तो आपने कमिटमेंट तो तोड़ दिया. लेकिन यदि आप बैठने से पहले यहाँ पे परमिशन ले लेते, इनरोल कर लेते सबको और फिर बैठते, तो आप कमिटमेंट तो टूट ही गया, क्योंकि 3 बजे टूटा मतलब टूट गया, टूटा तो टूटा, खत्म, कमिटमेंट टूट गया. लेकिन इंटेग्रिटी आपका बच जाता कि आपने रिस्टोर कर लिया. आई एम सॉरी, 3 बजे आना था,
मैं मिस कर गया, आई विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। आई विल सी दैट कि मैं जो फालतू बात में लग गया या कुछ एक्सीडेंट में लग गया और कम्युनिकेट भी नहीं किया, आई विल टेक केयर ऑफ। तो आपने इज्जत किया, अपना जुबान का इज्जत किया, तो इंटेग्रिटी आपका वापस आ गया। तो कमिटमेंट में आप कभी रहे या नहीं रहे तो भी जिंदगी चल सकता है। जैसे आप यदि नहीं भी आए 3 बजे तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन उसकी इज्जत ना करें, पता भी नहीं चले कि जुबान तोड़ दिया, बैठ गए, हाँ भैया आगे बताइए अभी और क्या है, खत्म। कमिटमेंट तो गया ही गया, इंटेग्रिटी भी गया। कमिटमेंट गया तो चल सकता था, इंटेग्रिटी गया तो कोई माय बाप नहीं है आपका, कोई बचाने वाला नहीं है। कितना पूजा कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, जो करना है कर डालिए, नथिंग वर्क्स विदाउट इंटेग्रिटी। इसीलिए हम लोग सॉरी वगैरह जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कल से जिन भी लोगों को, कोई उपाय नहीं है, सबका मालिक एक। साईं बाबा के पास जाओ, हाथ उठाए हुए बैठे हैं, सबका मालिक एक भैया, इंटेग्रिटी। तो इधर से कुछ नहीं मिलेगा, यदि उधर तोड़ के बैठे हो तो इधर नहीं मिलेगा। क्लियर है? जिसको समझना है समझो, जिसको नहीं समझना है मत समझो। ऑनरिंग योर हमारा जुबान। अब कभी अब हम लोग कितना है ना बहुत ड्रामाबाज माइंड हम लोगों का। सर 3 बजे तो आपने बोला था, मैंने थोड़ी बोला। मेरे हिसाब से तो सर कम से कम क्या है कि इतना झेले हैं 1.5 दिन आपको, तो 1.5 घंटा मेरा बनता है। इतना थके हुए हैं, सोए नहीं ठीक से, ये वो लन बन, तो 3.5 मेरे हिसाब से सर दिमाग में था। अब मैंने तो बोला भी नहीं था कि 3 बजे आऊंगा, आपने कहा, हमने सुन लिया, दुकान है सुन लिया भाई। नाउ इफ यू हैव ना, यदि आपने जो भी आपके सामने में कहा जाए और आपने यदि उसका प्रतिकार नहीं किया उस समय में, तो ये माना जाएगा कि आपने उसको, दैट इज योर वर्ड, वो अब आपकी जुबान हो गई। यदि वाइफ ने आपको कहा कि आज रात को 7 बजे आप आ जाओगे ना, और आपने बिना कोई जवाब दिए हुए निकल गए, इसका मतलब आपने प्रॉमिस दिया है कि 7 बजे आएंगे। आप ये नहीं बोल सकते मैंने कुछ बोला कहां था। मौनम स्वीकृति लक्षणम, संस्कृत में लिखा हुआ है, विजडम इज देयर। मौन स्वीकृति का लक्षण है कि हाँ ओके, तो आपने नहीं बोला तो भी मौन सच्चा सही माना जाएगा। और 7 बजे नहीं आए तो आपने वर्ड को तोड़ा। अब ये अलग बात है कि ना वो पकड़ने वाली है ना आप पकड़ाने वाले हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। भाई ऐसा है कि जब 9 बजे वो झगड़ा कर रही है आपसे, कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रही हो, यू आर एजुकेटेड पर्सन, ऐसा बात किया जाता है क्या? आप उल्टे और चढ़ाई कर रहे हो कि भाई ऐसा बात किया जाता है, जबकि ब्रेक किया किसने वर्ड? आपने 7 बजे का। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो झगड़ा क्यों कर रही है, ना वो आपको बोल रही, क्योंकि वो ट्रेनर थोड़ी है जो पकड़ के बताए कि भैया आपने वर्ड तोड़ा। बट बॉटम लाइन इज कि आपका रिलेशनशिप स्टिंक्स। वहां पे कुछ संभावना है ही नहीं कि कोई संसार का निर्माण किया गया। 2-3 बच्चे ही बन गए ना, भगवान का लाख शुक्र। कहां हम लोग 100 बच्चे, 1000 बच्चे, लाख बच्चे और इंडिया के बच्चों को बनाने की बात करें, या उनका हेल्थ केयर देने की बात करें। बेचारे किसी तरह से वो 2-3 बच्चे निकल जाए, भगवान की कृपा। That is who we are, as ordinary as that in our daily life. And wherever it is not there, it stinks. And it happens in the biggest of people. It is not that, many of the successful people, you will find they are very much in integrity, in work, काम पे एकदम कमिटमेंट और इंटेग्रिटी में है, घर पे नहीं। तो उनका देखेंगे कि जो प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है टू ए सर्टेन एक्सटेंट, जब तक कि ये वाला उधर इम्पैक्ट न मारे।
जब तक वो सेपरेट करके रख रहे हैं, they can manage that to a large extent. लेकिन घर वाला जहां पे वो लेट कर रहे हैं, वर्ड को तोड़ रहे हैं, it's horrible. So it's ना जितना हम कमिटमेंट और इंटीग्रिटी काम में दिखाते हैं, वो घर पे भी दिखाना, बच्चों के साथ भी दिखाना, वो भी जरूरी है. और यदि मेरी वहां आदत नहीं है, तो रियल टाइम में हम वर्क में भी नहीं दिखा पाते. वर्क में भी जहां भी चैलेंजिंग आ गया ना, नॉर्मल रूटीन ठीक है, 9 बजे आना, 9 बजे आना, 9 बजे आना, लेकिन जहां पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया, जहां पे कभी 3 बजे की बात हो, 6 बजे की बात हो, यू नो, अदर देन योर हैबिट, यू आर गॉन. बिकॉज वर्ड का तो आपने इज्जत नहीं करना सीखा है. आप तो एक शेड्यूल में बंद गए हैं, वो आपका बॉडी एडजस्ट करिए. Clear, keeping your word and honoring your word. Which is more important? Honoring your word. Both. Which is more important? Both. हाँ, नहीं तो ले लगे फिर बोलेंगे सॉरी. But which is more important is like there is nothing like that question, because both is important. Now I will revise my question. Like, which you cannot compromise at any cost? Integrity. That you got. Honoring your word. And we do it so casually. If you take the feedback from your people, they will tell you that your integrity scale is less than 5, less than 2, less than 1. There is, in theory we know, right? Mohan Babu? For so many years, we know the integrity. What is integrity? And in practice? So knowing doesn't make difference. Actually, if I am in practice, day in and day out, day in and day out, that makes difference. Even if you have broken the expectation of somebody, that's also authenticity in a different level. So therefore हम लोग कल से बात कर रहे थे कि sorry to acknowledge that. What else is integrity? Creating, empowering context. आपने यदि किसी भी घटना को लेकर डिसएम्पावर्ड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, आप आउट इंटेग्रिटी. Okay, our purpose is to always have empowering thoughts and ऐसा. Context, not thought. There is a difference. Context is संदर्भ. The background. So if you are not positive, you are out and Not empowering. There is no positive. okay. Empowering. Whether it is giving you power and other power. Okay. So you mean to say it's our purpose to be empowered, basically. Empowered. Not purpose. How are you connecting this with integrity? It is intended. Creating empowering context. Like any event happens, like terrorist attack happened, right? So there are two ways to it. One is create disempowering context, that Pakistan is this, and then we fill with complaint and anger and upset and venom and spout on them, spite, throw on them. That is one way to look at it. Another is to create empowering context. Is that, okay, this is happening, where I am responsible or we as a country is responsible, and how we can take care of others, how we can strengthen our security system, how we can strengthen our better relationship, how we can show our strength on the international scale. So that is empowering context. And another was disempower. Disempower. कुछ भी घटना घटती है, कल नमक ज्यादा था,
दो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, एक डिसएम्पावरिंग और एक एम्पावरिंग। डिसएम्पावरिंग हो सकता है, empowering हो सकता है, how it can be better, how am I responsible, can I give the feedback, right feedback to the right people, like when his feedback went, there was a love behind it. That communication went all the way to the kitchen. In next 10 minutes, that was my job because I got the communication. The moment I got it, because it was empowering. So the empowering communication must be empowered. What we do, we sit on those empowering and all the disempowering thing, नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा, नमक ज्यादा, नमक ज्यादा, उसको पूरा फैला दो। बेचारा जो बना रहा है वो एकदम तो आज अपने को वो खाना नहीं मिलता, और ज्यादा कहीं पे किसी को नमक ही कम था या कम नमक नहीं आया, नमक ही नहीं आएगा, लो you deal with it. Creating empowering context. हर समय में उस घटना से ऐसा सोच निकालना जो आपको पावर दे और दूसरे को भी पावर दे। तो इसका मतलब जब जब आप ऐसा सोचते हैं, सरकार की कमी है, वो आदमी ऐसा है, महाराष्ट्र ये है, कांग्रेस ऐसा है, यूपी ये है, वाइफ ऐसा है, हस्बैंड ऐसा है, सोसाइटी ऐसा है, ये ऐसा है, these are all you are out integrity and nothing works without care. What else? Integrity, you thought it is one, work your plan. Plan your work and work your plan. यदि आपने अपना प्लान नहीं बनाया है और उस प्लान पे यदि आपने काम नहीं किया प्लान के हिसाब से, you are out in it. तो अभी तक हम लोग सोचते थे टाइम पे पहुंच गए ना, अभी तो इंटेग्रिटी है, और टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो आउट इंटेग्रिटी। तो मैंने देखा है कितने लोगों, मैं दिल्ली में एक मीटिंग में गया, that is he is my senior from Engineering College, financial consultant, CEO of a capital company. मैं उनके रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा हूँ, 11:29 हो गया है, वो आए नहीं अभी तक। ये इंटर्न नवीन लड़े मिला ले 11:30. Yes, actually 11:30 he was in, but you know that is the definition of integrity. We think भागते दौड़ते एक्सीडेंट करते कराते बचते बचाते घुस गया, इंटेग्रिटी में आ गया, that is not integrity. One level of integrity कि चलो वर्ड रखेगा, but whether you have created empowering context, whether it was planned, and are you working on plan based on that, that's also the part of integrity. So these are some of the access points through which we can hold ourselves into integrity. Any question? Okay. You want to say something to restore your integrity? Yeah, sorry for coming late. Okay. I'll take care of it in the future. I will never come late. Next time we will not be repeated. Okay. How do we know? तो कैसे पता चलेगा कि अगली बार रिपीट नहीं होगा? That is my guarantee. तो गारंटी और आपका गारंटी, और कोई आपका गारंटी ले सकता है क्या? Somebody who can take your guarantee. सेल्फ अटेस्टेड समझ में आ गया। कोई और का गारंटी कोई किसी को होता है ना, पर्सनल लोन देते वक्त में आपका गारंटर कौन है? तो आपका इंटेग्रिटी या गारंटर इधर में किसी को आप बना सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को इनरोल कर सकते हैं, डू दैट।
Anybody you can enroll, you can take guarantee on your behalf. I'm telling to myself that I got that, but I'm not enrolled. So I will be enrolled if somebody else is enrolled by you, who says yes, I am taking guarantee of. I think everyone who is in this class, I'm telling to everyone. That is all right, but enroll someone. Pick one whom you want to be your guarantor, and they may say no, and then you can pick another. That's enrollment. You are taking from this. Yeah. Okay, I'm giving this to Ajay. Yes. Okay. Yeah. What is that? I'm choosing Ajay if to be a. So tell me, Ajay, if enroll him. Okay, Ajay, if I will be on time. If I will not come here anything, you will be my guarantor for the same. If you will not come, then you guarantor. मतलब No, I will be coming on time, but I am making you a guarantor. Oh, that means what? What is at stake on his behalf? उनका जायदाद, संपत्ति, ये सब क्या कुर्की जब्ती होने का क्या कॉस्ट क्या है? Oh, nothing is that. Just he's my friend. That's it. हाँ, but what is the cost involved? उसको बताना पड़ेगा ना, इन्वॉल्वमेंट करेंगे किसी को, तो सारी चीज बताना पड़ेगा ना, इसका बेनिफिट क्या है, मेरा गारंटर बनने का बेनिफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, उनको समझ में आएगा कि हाँ इतना झटका मैं सह सकता हूँ, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनको लगेगा कि नहीं भाई, the benefit is less, I will not accept. So there is no cost involved in this. How come? Guarantor you don't know? You don't know the banking terms, the people who are not. Guarantor means all your liability will come to something like that. He will be responsible for all your liability. So naturally, if you are breaking your word, there is a liability, right? He will have to pay. Maybe in terms of money, maybe in terms of work, maybe in terms of enrolling others. I don't know what. The cost is huge. Whenever we break our word, there are so many consequences, so many actions and reactions are linked, and we will never be able to fathom the cost. So we take it lightly in our life. ठीक है, 5 मिनट लेट आया ना, पर उसका कॉस्ट क्या है, और उससे पूछो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा हो, तो भाई 5 मिनट या 1 मिनट का अंतर क्या है। उस डॉक्टर से पूछो जो ऑक्सीजन और हार्ट बीट उस पर डिपेंड कर रहा है, मिनट में काउंट कर रहा है, सेकंड में काउंट कर रहा है कि भाई 5 मिनट थोड़ा सा। कितने बार डॉक्टर ने कहा है 5 मिनट और लेट हो जाता था तो सॉरी, so many times. So yes, I had enrolled him. It's up to him that he want to be with my statement or not. He's okay with my statement or not. It's up no, to but him. you have not told him the cost and benefit. I told there is no cost. How come? That's your Okay. line. Okay. You are hiding something from him, the facts of life, and you want him to be the guarantor. Suddenly he will say, no बाबा, जो आदमी झूठ बोले मेरे को, उसको मैं गारंटर बनूंगा क्या? जो आदमी बोले कोई कॉस्ट नहीं है गारंटर होने का, गलत बोल रहा है ना। भाई मेरे को यदि 15 लाख लोन लेना है, तो मैं यदि गारंटर को बोलूं, मामा जी को गारंटर बनाना चाहता हूँ, मामा जी कोई नहीं, गारंटर ऐसी साइन करने के लिए है। तो मामा जी बोलते हो बेटा, तू ये लाइन नहीं बोलता था तो मैं कर देता था, ये लाइन बोलते हो तो रुक जाओ, थोड़ा बात कर लेता हूँ तेरे उससे, बैंकर से, कि क्या साइन का कोई वैल्यू नहीं है क्या? See, start facing the reality of life. You have enrolled him. How do you say that? You only said you're not. That's not enrollment. What you're saying is you have told him. वो जो not equal to enrollment. 3 स्टेप जो है, Only when he is accepted the other way around. can you see Dhanendra? You are not practicing what is being taught here. 3 स्टेप्स याद है? What is so right now? क्या होगा यदि कुछ नहीं हुआ तो, और क्या फायदा है गारंटर होने का? जब आप ये बताओगे तब ना कोई इनरोल होगा। Yes, please. Thanks, Rangappa. Follow those 3 steps. So actually, I'm never
done any enrollment. To do that, what is to do that? Exam facing problems. Do that. So the word enrollment is not equal to conversation, it's only conversation. When there is an agreement mutually acceptable by both, that he is accepting your idea, that becomes enrollment. That is, he is enrolled into your idea. Just by you muttering is not equal to enrollment. It's equal to conversation. पहले अभी का स्थिति बताओ कि भाई आई एम स्टक हियर. It may be possible that I will be asked to go out from the hall. मेरे को बोल दिया जाए भाई जैसा आप ट्रेन से आया ना वैसा आप चले जाओ. मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ. I may not be allowed to learn anything. My life is at stake. This is the situation right now. What will happen if nothing is done? Naturally, if you are not the guarantor, then he may be, like he said, that he may be asked to leave the room. And what will happen if you are the guarantor? Then, I may be allowed to sit in the room. If that is so, I will learn something. And I will give you the credit for whatever I will learn in this class. That, because of you being the guarantor, I could learn something. I have made difference in my life. So if you communicate that way, people can get inspired. वो 3 स्टेप को ध्यान में रखते हो. Is it clear? Can you go ahead now? If I'll come late, it will be your opportunity that